Make some noise for Desi boys. 1, 2, 3, go. इंग्लिश ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के देसी बॉयज सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉयज. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the coolest dhaba on internet, the Vocab Dhaba. I'm your main steward, your waiter Akash Gautam, and assisting me is my Chotu, your assistant waiter Atharv Gautam. And together, both of us, we're going to serve each of you who are stuck on the English vocab highway. We present to you English with a desi tarka, in a crazy, in a funny, in a totally eccentric way. We are a 24/7 dhaba on internet. You can log in anytime, park your vehicle, and devour any many dishes as you want. If you want a powerful vocabulary in instant time, this is the place. Yep. Bollywood, Hollywood, songs, advertisements, cricket. We will group to any extent to get the word connect right. बेसिकली इनके कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं जब तक वो डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड आपके जहन में हम घुसा ना दें, ड्रिल ना कर दें. No preaching, no global gyan, just plain pure desi learning here. You know, on a serious note, we have to share something serious, very serious with you. Our plannings have really gone haywire. Initially, we were, for the shooting of this Vocab Dhaba, we were intending to go to Switzerland like a Yash Raj movie, Yash Chopra movie. But then, you know, these are Corona times, Corona came in and the flights got cancelled. We were taking a chartered flight, but when we thought we must respect the law. We must. And another problem that I'm sure you would be having with us is that none of us is a female. You would have preferred Alia Bhatt or Alia Bhatt standing by me instead of an Atharv Gautam. But then, you know, दुनिया कहाँ पे चलती है, problems आ गई. कहाँ पे आई problems? बात पैसे पे आ गया. पैसे दे रही थी वो, लेकिन हम बिकाऊ नहीं है, हमारी वैल्यूज ऐसी हैं कि हम पैसे एक्सेप्ट नहीं करते. So you'll have to bear both of us. We're going to present to you hundreds of difficult vocabulary words, utility words, which you will see on the news channels, read in the newspapers, and which appear in the competitive exams. And we will serve you in a total source of fun. Okay, so आज ढाबा के मेन्यू में है क्या? आज हम आपको 13 व्यंजन सर्व करेंगे. We're going to serve you with 13 very sumptuous dishes. Let's look at the menu first. Starting with bucolic, bedlam, gainsay, encore, trepidation, camaraderie, pernicious, affray, extant. 9 हो चुकी हैं, देखिए कितनी आती हैं आपको 9 में से. And then we move to the 10th one, blandishments, and 3 more today, inamorata, incognito, and deleterious. So इन 13 में से आपको कितनी आती हैं? अगर आपको 10 से ज़्यादा आती हैं, it clearly means that you have had a pedigreed reading habit. You have stayed a good reader in your life till now. And in case you do not know more than 10, then you are in a better zone because you are at the dhaba and we promise you कि अगले 10-12 मिनट में हम ये 13 की तरह आपको घोट कर पिला देंगे और अंदर तक घुसा देंगे ताकि आप कभी भी ना बोलें इनको. ये मेरी आपसे कमिटमेंट है. पर उसके लिए आपको मुझे अगले 15 मिनट 200% देने पड़ेंगे. I'm hoping आप देंगे. Okay, so let's make noise for the bucolic boys, Desi boys, Rocco and Hunter, you know, bucolic boys. So bucolic boys, bucolic शब्द को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. Bucolic is something when used as an adjective, it suggests a village or a rural life. Desi boys, the connect that you can help you remember is Desi boys would be called as bucolic boys. And देसी घी would be bucolic घी, जो आपकी मामा, दादी, नानी और कई बार पापा भी चपाती बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? देसी घी नहीं, आज से होगा bucolic घी. याद रखने के लिए you don't have to necessarily use it 100%. The connects are almost 80% right. 20% you have to back each of the connects with a good dictionary. This is just as a mnemonic to help you remember. So the synonym of bucolic would be rustic. So let's make noise for the bucolic boys.
नाना पाटेकर, आई नो मेरा नाना की एक्टिंग बहुत चीप रही है, आई कुडंट डू इट राइट, बट स्टिल यू हैव टू बेयर विद मी. नाना पाटेकर वुड बी कॉल्ड एज गेनसे पाटेकर. I hope the connect is it really gets into your mind. Nana Patekar would be called as Gainse Patekar. Now let's look at the word here first. Gainse, जरा सा झूम लूं मैं, Gainse, Gainse, Gainse. He gainsaid it. Na re na re na. Now the meaning of the word gainsay is to deny, to dispute, to contradict. मना कर देना. कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती ले दे सोनिया, I gainsaid her. मैं कहना सोनिए, ना 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 करते प्यार तुम्ही से कर बैठे. Could be said as gain से करते प्यार तुम्ही से कर बैठे. I hope with all this word has really become a part of your vocabulary for your entire life. Hello? Hello? मैं पूजा बोल रही हूँ. साले तेरा बाप बोल रहा हूँ, इधर देख. शर्म नहीं आती? I'm sure you would have loved that movie Dream Girl आयुष्मान खुराना की. उस ड्रीम गर्ल मूवी में आयुष्मान खुराना पूजा बन के ऐसे ऐसे गधों को सेंटी करता था और ये सेंटियाए वो घूमते रहते थे. एनीवेज कोई बात नहीं है, उम्र है, कोई बात नहीं. सो ड्रीम गर्ल मूवी के लिए आज हम 2 वर्ड्स करेंगे उस मूवी से, एंड आई प्रॉमिस दीज 2 वर्ड्स विल गेट इनटू योर हेड परमानेंटली. The first word that we're doing out of the movie Dream Girl is the word inamorata. 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 Inamorata means dream girl. किसी की जो क्रश हो या एक लेडी जो किसी का प्यार हो, वो उसको कहते हैं हम inamorata. Inamorata, right? और second word we're doing out of this movie is Ayushmann Khurrana. He acted so brilliantly well in this movie. He's also from Chandigarh, yeah? Yeah, he is. Yeah, सारे dude Chandigarh से हैं ना. So anyways, so second word we're doing in here is incognito. 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 आयुष्मान खुराना ने इस मूवी में पूजा बन के लोगों को सेंटी किया, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करके, कंसील, अपने आप को कुछ और शो करके. दैट इज द वर्ड इज इनकॉग्निटो. हम इन दोनों वर्ड्स को ग्रेटर डेप्थ में अभी देखते हैं. सो लेट्स रिवाइज अगेन. इनामोराटा इज ड्रीम गर्ल. Dream girl is inamorata. Now, as a word, the meaning of inamorata is a person's female lover. We're just revising everything again. His new inamorata is a suspense. And the second word that we did out of this movie was incognito. And it could be used both as an adjective or as an adverb. The meaning of this is when one's true identity is hidden or concealed. He's a top cop of India, but these days he has gone incognito. Must be some special ops. अभी एक मूवी आई थी अनजाना अनजानी 7-8 साल पहले, उसको याद रखने के लिए वी कैन से इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटी. ओह सॉरी, दैट्स रियली वियर्ड, बट इनकॉग्निटो मीन्स समथिंग when one's true identity is hidden. More memory connects to help you get in forever are Krish or Spider-Man in the movies. They wear a mask to remain incognito because they don't want their real identity to get known to the people. और वो कहते थे ना, हम तुम तो निकले बड़े छुपे रुस्तम, मतलब इनकॉग्निटो रुस्तम. And Pandavas, they spent 1 year incognito, and Ravan, he went to kidnap Sita मतलब incognito. अपना वेश बदल के गए थे वो. Right, so I think with all these memory connects, these words are there to stay with you, incognito. And one more connect, incognito browser. I'm sure a lot of you would not want me to explain what I'm talking about in here. Anyways, let's move. Tiger is extant. टाइगर जिंदा है, सलमान भाई, मतलब टाइगर जिंदा है. नीचे इनामोराटा है इनकी कि नहीं पता नहीं. So it's a suspicious case. Now tiger is extant. It means tiger is zinda. Tiger zinda hai. So the word extant means, as an adjective, it means still in existence. Something which is still surviving. Many terrorist groups are still extant in JNK. They're still functional. They haven't gone dead. They're still in existence. Tiger zinda hai. This tiger is extant. खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है. खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है. सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे
अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कौन सी मूवी का गाना है ये? शोले। और इस गाने को हम चेंज करते हैं अंग्रेजी वोकैब ढाबा स्टाइल में, ये कमराडरी, कमराडरी, ये कमराडरी हम नहीं तोड़ेंगे। कमराडरी मीन CAMARADERIE, कमराडरी मीन्स दोस्ती। तो जो मिलेनियल्स है जिन्होंने शोले मूवी नहीं देखी, धिक्कार है आप पे। बट अगर आपने नहीं देखी कोई बात नहीं, अभी 5-6 साल पहले एक मूवी आई थी दोस्ताना, सो दोस्ताना मूवी वुड बिकम camaraderie, right? So happy friendship day would become Happy camaraderie day. Let me give you another cool way to remember it. When two friends can share a kamra and a dari, they have a camaraderie. एक और फिर से मजा आया थोड़ा सा, एक और फिर से When two friends can share a kamra and a dari, they have camaraderie. You got that? Yeah. I'm very sure you got that. Yes. एक और फिर से देखते हैं camaraderie को. As we said, भाईचारा or brotherhood is camaraderie. Happy Friendship Day is Happy Camaraderie Day. The movie Dostana is camaraderie. And the best memory connect, my friend Hazla Rahmani shared with me. He works in Google now. Sharing again with you. When two friends can share a kamra and a dari, they have camaraderie. Right? I'm sure after this you're never going to forget it. Now we're going to do 3 words in one go. Encore, trepidation and blandishments. Encore, trepidation and blandishment. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain. Give me another chance, I want to grow up once again. Now we love this movie, all of us, did not we? The movie was 3 Idiots. And we're going to do 3 words out of this movie. इस movie से हम 3 शब्द अभी permanently आपके दिमाग में हम drill कर देंगे. पहला शब्द है he said सारी उम्र हम डर डर के जी लिए. डर डर के means trepidation. So let me speak the word. Spelling is TREPI DATION. Spelling mistake. Okay. Sorry. Now, the word is trepidation. TREPIDATION. सारी उम्र हम trepidation में जिए. इसको हम डिटेल में चेक करेंगे स्लाइड पे with the usage, meaning and all different forms. More connects as well. The second word we're doing in here is he further says, give me another chance, I want to grow up once again. So he's seeking another chance, once more, once more, once more. And the word for that is? Encore. ENCORE, encore. When you ask for a repeat performance, for example, when Kohli goes to bat, or Sachin used to go to bat, when they used to hit the ball for a 6, what did the crowd say with the placards on? Once more, once more, once more. Which clearly means in English? Encore, encore. Yeah, ENCORE. Another way to do an encore is that movie came in a Stree movie जहाँ लिखा होता था घर के बाहर लिखे थे ओ स्त्री कल फिर आना, कल आना या कल फिर से आना, मतलब repeat, they don't want it today, कल आना, repeat, कल फिर आना. Encore means once more, once more. And the third word we do out of this is blandishments. We were saying encore, once more, once more. So for the people who are fans of Kings 11 Punjab, if they used to go to the Mohali Stadium, what did the fans used to say or write on the placards? They used to say, "Ik wari hor channa, ik wari hor," means once more, ek aur chakka, once more. So these are blandishments. The word we're doing is BLANDISHMENTS. Blandishments means positive words of encouragement, so that to elicit something very good out of someone else. So we're going to check these 3 words on slides in more detail so that you never ever forget them. Let's do it now. Encore means once more, again. After the amazing performance, the audience started applauding and shouting, once more, once more, once more, encore. We already done it, we're just recapitulating it for you. O Stree Kal Fir Aana, encore. Trepidation, सारी उम्र हम trepidation में जिए. A feeling of fear or anxiety about something that may happen or may not happen. When used as a noun, The way news channels report about corona these days, it can easily fill the viewer's mind with trepidation. Right? Third word that we did from a single song was blandishments. As I said, you can hit one more 6, ik wari ho channa. We have
positively encouraging someone, a flattering or pleasing statement or action used as a means of gently persuading someone to do something. वो कहते हैं ना, कर सकते हो तुम, करके दिखाओ, ये वो this that, you know. So these are blandishments. The blandishments of the brochures of private engineering and MBA colleges. Brochures अगर आप देखते हो ना तो उसमें बड़ा कुछ लिखा होता है, हमारा कॉलेज आपके लिए ये कर देगा, वो कर देगा. यूजुअली करता कुछ नहीं है, बट स्टिल दीज आर द ब्लैंडिशमेंट्स. गोलमाल हो, गोलमाल हो, गोलमाल. So Golmaal again, the Rohit Shetty movie, if you are like that genre, could be called as Bedlam. Bedlam, Bedlam. So Golmaal Returns would become Bedlam Returns. Golmaal again would become Bedlam again. So Bedlam means a scene of uproar and confusion. There was Bedlam in the parliament, but then it is so common in India, na? You visit a zoo or a parliament, there's a lot of intersection. Anyways. Dingadanga 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 ding. Re bapu dingadanga 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 dingadanga. पढ़ाई कर. बापू सेहत के लिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है. रे बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है. इतनी अंग्रेजी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ 2 महीने से, अभी भी तो हानिकारक बोल रहे हैं. So the word we doing here is बापू सेहत के लिए तू तो deleterious है. I'll get its spellings first. Deleterious is DELETERIOUS. deleterious. और एक सिनोनिम और साथ में करेंगे. आज हम दंगल मूवी से 4 शब्द निकालेंगे और परमानेंटली आपके दिमाग में घुसा देंगे. बापू सेहत के लिए तू तो deleterious है और इसका सिनोनिम है pernicious. PERNICIOUS. अभी स्लाइड पे आएगा ताकि दिमाग में परमानेंटली घुस जाएगा. बापू सेहत के लिए तू तो deleterious है, deleterious है और pernicious है. और ये मूवी कौन सी थी भाई? दंगल. फिर से अंग्रेजी नहीं आई. कितनी वकाब कराई 2 महीने पहले जैसे शुरू हुआ है. अफरे. The word for दंगल is अफरे. AFFRAY. अफरे means पंगा. हमारे पंजाब में नॉर्मल लोग भी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अफरे हो रहा है. वैसे दिस इज अ रियल मिसकंसेप्शन अबाउट पंजाबीज. पंजाब इज पंजाबियत, गुरबानी, इतना फिर भी हम इतने आजकल थोड़े उजड़ रहे हैं. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. पर अफरे मीन्स दंगा. अगर फिजिकल वो हो, ब्रॉल हो, तो उसे कहेंगे हम अफरे. लेकिन अगर फिजिकल ब्रॉल ना हो, सिर्फ वर्बल हो, वर्बल एक्सचेंज हो, गाली गलौज, तो उसे कहेंगे हम ऑल्टरकेशन. गाली गलौज नहीं, बट वैसे तू तड़ाक हो जाए उसे कहेंगे हम ALTERCATION. सो एक मूवी से हमने एक के साथ 3 फ्री. दिस इज अमेजिंग एंड ऑफर. 4 वर्ड जो हमने किए. नंबर 1 वाज बापू सेहत के लिए तू तो डिलीटेरियस है. और सिनोनिम क्या है उसका? परनिशियस. हाँ. और मूवी कौन सी है ये? दंगल, which is अफरे. एंड अगर जो पंगा हो वो सिर्फ मतलब सिर्फ वर्बल हो, उसे क्या कहेंगे? Altercation. Let's check the words in greater detail on the slide here. So we did 4 words out of this. बापू सेहत के लिए. We just said it. Let's recapitulate it again for you. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. बापू सेहत के लिए तू तो pernicious है, deleterious है. So as an adjective, the meaning is causing harm or damage. Playing lots of PUBG can have deleterious effects on children, damaging effects on children. एक pernicious anemia आया था. If you read in a class 8th biology or 9th class biology book, the RBCs उसमें deform हो जाते हैं. Pernicious anemia means very deadly anemia है ना. अब तो उसकी cure मिल गई है, पर पहले नहीं थी, तब pernicious कहते थे उसको. Affray is dangal. Just revising it for you. The meaning of affray is an instance of group fighting in a public place that disturbs the peace. He was charged with causing an affray. I'm hoping you got that. You got that right? Okay. And again revising, if dangal is verbal, then it is called as altercation. जब sports में usually हो जाती है ना, altercation. So let's revise. How many of these 13 words have you finally found them forever in your mind? Let's check. Do you know the meaning of bucolic? क्या होता है? बोल के बताइए. वीडियो के साथ साथ बोलिए. Let me see how smart you are. Bucolic. Let's make noise for the bucolic voice. Desi. Bedlam is golmaal, uproar, noisy, confusion, बहुत ज़्यादा. Golmaal returns means bedlam returns. Gainsay means na. कुड़ी में नु कहंदी
मैनू जुत्ती दे दे सो ले दे सोनिया I gain said her encore once more repeat performance trepidation सारी उम्र हम trepidation में जिए camaraderie भाईचारा when two friends can share a kamra and a dari they have camaraderie pernicious is the deadly enemy पापू सेहत के लिए तू तो बहुत pernicious है affray noisy disturbance पंगा दंगल extant something which is still in existence tiger जिंदा है tiger extant है inamorata someone's beloved a lady who you have a crush upon incognito with one's true identity hidden जब आप रावण सीता माँ को किडनैप करने के लिए भेष बदल के गया था incognito hello मैं पूजा बोल रही हूँ incognito deleterious I'm sure you know it is the same as pernicious. So with that, ladies and gentlemen, boys and girls, we have lived to our commitment of serving you with the 13 words. You would not believe how much fun we had in the making of this video, and we wish to make dozens of such videos, and for you to be the first one to receive these videos in your inbox for the first, all you need to do in here is प्रेस द बेल आइकन. हाँ बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट हमारा सारा मेहनत हमारे ढाबे का खाना आपको बस फ्रेश पहुंच सके स्टेल ना पहुंच सके और अगर आपको अपने वेटर्स अपने स्टीवर्ड्स की सर्विस पसंद आई है तो आप हमें टिप दीजिए और टिप में हम आपसे कोई मनी नहीं मांग रहे ऑल वी सीकिंग आउट ऑफ यू इज दैट यू शो अस सम लव एंड यू कैन शो अस अ लॉट ऑफ लव बाय शेयरिंग अ हार्ड वर्क ऑन योर सोशल मीडिया एंड हमारा नया बिजनेस है हम चाहेंगे कि हमारे ढाबे पे और कस्टमर्स आएँ और हम आपको फ्री में सर्व करें ताकि आपकी अंग्रेजी एकदम ढिंचैक एकदम रापचिक कत्तल जहर हो जाए एंड यू रियली ग्रो इन योर कॉन्फिडेंस एंड स्पीक फ्लैम्बॉयंटली एंड लाइक अ जेंटलमैन और अ जेंटल लेडी. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. स्टे राइजिंग, स्टे शाइनिंग. वी एंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो. थैंक यू.